चलो ठीक है. Now Akshara, Yeah. whenever you have this, now can you tell me what kind of graph you think this is? Okay, let me bring the water. Huh? Hold on. You think, okay, can you plot this graph as such in normal terms? Can you plot this? No. नहीं चलो ट्राई करो. चलो आई एम गिविंग यू हिंट. मेक y as a subject and try to find the equation. Make y as a subject in both the cases and try to find out Why? how the graph will look like. Okay, don't do Desmos. Correct, don't use Desmos. I want you to make a y as a subject and you should be able to understand how the graph will look like. Then I'll come to this. Okay, then you'll understand how easily you can solve the Simon equation. I am coming in 2 minutes. I bring the water and come. Chalo, start. Done. So how what is the value you got? I made y the subject and then I equated both of them. नहीं इक्वेट ने And बात I ही got वो सॉल्व करना छोड़ो. आई वांट टू सी हाउ द जाइना पोलाडा विल लुक लाइक. it will be a curve only, but I ये शो don't मी शो know मी शो मी शो मी why. प्लॉट हियर करो. प्लॉट इट हियर एंड शो मी. इफ यू आर नॉट गिविंग द कोऑर्डिनेट आई एम ओके विद इट. एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं बनाया चलेगा. वेरी गुड. बस डन. Yeah. ओके रॉन्ग. But I don't know if it's a cup or cap, like हाँ ulta. I don't know if it's सीधा or ulta. है. तो y इज इक्वल टू क्या आया? व्हाट विल गॉट y Mm, इज इक्वल टू हियर? y equals to 37 minus x square upon 4. हाँ 37 y इज इक्वल टू. 37 minus x square, the whole thing upon 4. And this is what I have written, right? Same way, right? And what will be this? Minus 8 minus 5x. Correct? Ayana will be able to tell. Ayana, Yeah. tell me which graph will look like what? So, Plot karo. अच्छा, Plot karo, darling. No verbal, only visual. 1 minute. Huh?
Yes. Like that. Hmm. That's for the first one. Okay. Now second. Mm. Or I'll draw it on the same graph. No, same now. Huh? Okay. Negative 5x minus 8. Negative 5x. Don't worry about the coefficient. I just want, yeah, how do you plot the line? Okay. सही जवाब. ठीक है, चल जाएगा. राइट. अरे क्यों डिलीट कर दिया? Oh, sorry, wait, I didn't mean to delete. Huh, okay. ठीक है. So this is what they have done. Akshara, हाँ because this is x square is negative, this is very important for you to understand. X square is negative, it is going to be ulta curve, right? yeah And this is minus 5, it will be negative slope, right? So ideally graph will look like this. X square become like this. Okay, chalo, I'll give you this idea. What exactly will look like, right? And then we'll see the Desmos, right? Okay. I'll just show you this is x square, simple minus x square will look like this, right? Now when you say x square minus 4, correct? X square divided by 4. So what will happen? Y is reducing in a lower, smaller format, right? So graph will look like this. It will expand, right? And secondly, what is the y-intercept? It is 9. So it will go like this and it will move as 9. This is a format 9.25. This is what exactly it will have a y-intercept, right? And also it is plus, like, if it is plus 37 upon 4, that means it will go towards the left, na? No. Are, this is y, na? It is male gender, right? Huh. So it is y it will go up. Oh. It will go up, right? So when does it go left and right? When you change in x bracket. Oh, when it is like x minus 2 the whole square or something. So when you do x minus 2 the whole square, if you go x minus 4 the whole square, it will move on the right hand side. Although you are negative it, it will move on the right hand side. Negative is right, opposite like it is. Okay. So movement इसके उनको नहीं है, right? Now this is minus 5, right? It is minus 8 here. So this will be like this. Graph will be like this. It will come like this. So it will go down and meet there, right? Okay. Now want to see on Desmos? देखना है अक्षरा? yeah Okay. Hello. Why I'm telling you this? Because they sometimes ask you to sketch the graph, right? So you should know the exact movement, what exactly it is happening. And I'm going to do this only. I'm going to put x square first. Correct? Then I put a minus sign here. Can you see this is what I told you? yeah That divided by 4. Can you see it is broader? yes And you put 37 divided by 4. Can you see 9.25? Yes or no? yeah Now second equation is minus 5x minus 8. I told you it is going to be very down. I told you, na? है ना? Can you see this? हाँ So these are the 2 points you want. Correct? Yes or no? Now what yeah does simultaneous equation mean? What do you mean by simultaneous equation? To the points where they intersect will be the answer here. Sorry? The points where these two graphs intersect will be the answer here. Correct.
What is the Simultaneous equation? There are two graphs, whether two curves, whether two lines, whether it is one line and one curve. Okay, when it is a curve can be a quadratic curve or a exponential curve or a cubic curve or a reciprocal curve. Any curve is okay, right? Yeah. Got this? Yeah. Hmm? Yes. Now you understood the solution, how to solve them, right? You have already given the answer. What you told me? Make a y subject equate. But I'll give you a very simple solution. I'll give you much better solution than this, right? You make only this What as a y as a subject. किसका? This y is Okay. equal to minus yx minus 8, right? And the substitute this y here. It is x square plus 4 minus 5x minus 8 is equal to 37. Yeah. So it is And equal to then x you square factorize. minus 20x minus 32 minus 37 is equal to 0, right? It is x square minus 20x minus 69 is equal to 0. So what do you get? It will be x square minus 23x plus 3x minus 69 is equal to 0, right? So Yeah. x is equal to x minus 23 and x plus 3, right? So what is x will get? X is equal to 23 or x is equal to minus 3, right? Correct? Correct or no? And then you Then substitute that in substitute the for first y. one. Y is equal to 23 into 5 minus 115 minus 8. Y is equal to minus 123. And for this, y is equal to 15 minus 8 is equal to 7. So coordinates will be 23 minus 123 and second will be minus 3 comma 7. These are the two solutions for it. हो गया? Sir, Simple. 1 minute. Minus 120. What else you want? China Purada, right? Okay. Happy? Yeah. Only happy? Eh? Yeah, sir. Only happy? You should say very happy. Just smiling. Eh? अक्षरा ठीक है समझ में आ गया अभी make linear equation as a y subject. Now this can be another equation also. Chalo, I'll give you, since I have taken this linear equation with non-simultaneous equation, I'll give you another equation. Chalo. Save, I'll put it here. I don't know what it will come, but you may have to use it with the this thing. X square plus 2x square plus y square is equal to 14. I'm writing anything. I don't know whether it will work or not. 15. Okay. Then y minus 2x is equal to 7. Come on. So How we'll to solve this? make y the subject for both. Very good. बना y the subject बनाओ दूसरे का.
So y is equal to 15 minus 2x square, the whole root, Okay, and y is equal to 7 plus 2x. very good. So I'll just 1 minute. जस्ट बस कुछ नहीं. मैंने अभी क्या किया? मैंने सिखाया सब कुछ पानी में गया. Leave the second equation, you'll make y the subject. So, and then you put that in the first one. Correct. Yeah. That is what I told you right just now, right? So it will be 2x square plus y plus अरे 7. सॉल्व करो. आई एम कमिंग. सॉल्व करो उसको. बुक पे सॉल्व करो चलेगा. What happened? Done? Sir, I've done the substituting thing like you said. हाँ. उसके बाद so I got 4x square plus 30x is equal to 2x negative. square plus 2x plus 7 the whole square is हाँ. equal to 15, right? So 2x plus 49 plus 28x plus 4x square gives 2x square plus 4x square plus 49 plus Yes. 28x. 49 क्यों? अच्छा 49 इधर आएगा. 49 हाँ, plus plus 28x 28x gives minus 15 is equal to 0, right? is equal to So हाँ, 6x 6x square square plus 28x plus 34 equals to 0. divided by 2, 3x square plus 14x plus 17 is equal to 0, right? This is 51, right? Can you have 51 here? No, right? तो क्या करोगे? Isn't it prime? Formula method, Uh, correct? formula. yeah. कल ही तो किया था. x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a, right? A is equal to 3, b A is is equal to equal to 14, 3, B is c is 14. equal to 17. So x is equal to negative 14 plus or अरे minus. वो करो ना बाद में. वो कर लेना. आपने समझ गया कैसे सॉल्व करने का? Yeah. कैलकुलेशन इज नॉट माय ऑब्जेक्टिव, राइट? कैलकुलेशन तो कर ही लोगे तुम लोग, राइट? So I'll just use this x square plus y square is equal to 15.
Can you see this? And what is another one? So we can't We see. can't see the test. Yeah, I agree. 2x plus 7. It is not touching at all, right? We can't see. अरे You can't क्यों? see yours. अरे Right. this हाँ किया तो अभी. Abhi, हाँ हाँ. now. It is not touching, so there is no solution to it, right? Oh, There is no common solution. Now, if I do this little bit more, 25, you will get a solution now. ठीक है? हाँ. But it is a non-terminating decimal, right? So you have to make it to 2 decimal points, right? So negative 1.1213. Whatever it may be, doesn't matter. वो जो भी आएगा डालिन, उसकी चिंता मत कर, right? I want to show because this is kind of question also sometimes come, right? Either Yeah. either circle or a oval, right? If it is circle, you may have got it, right? हाँ, circle होता तो मिल जाता, ये oval था इसके लिए नहीं मिला. Can you see this? Clear? Oh, because of the 2, it was like that. Huh? Because of the 2x square, it was not touching. Yeah, 2x square, it will become oval. When I add this, it is not a circle, it is oval. Can you see this? Oh, okay. It becomes an oval. If I put it here, it will become an elongated oval. If I put it 4 here, if I remove this 5, correct? Got it? Yeah. अभी बहुत टाइम है इसके लिए, अभी चिंता मत करो, राइट? ओनली थिंग इज यू विल गेट x square plus y square ओनली, डजंट मैटर. ठीक है, चलो, अंडरस्टूड? Hmm. कैन आई गो फर्दर? Yeah. ग्राफ. ओके, तुम ना पहले डाल के मेरा पूरा टाइम खराब कर देती हो अक्षरा. What's wrong? डाउट डाल के मेरा पूरा टाइम क्लास का वेस्ट कर देती हो बिल्कुल. मैं डाउट में रह जाता हूँ, बट ठीक है, डाउट सॉल्व होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एटलीस्ट दिस पीपल शुड थैंक यू. अक्षरा, सॉरी, हाँ सर. अक्षरा ने, आयाना Yeah. एंड तन्वी, थैंक यू बोलो उसको. Thank you. Thank you. ये डाउट डालते जा रही है तो तुम्हारा डाउट भी क्लियर होते जा रहा है, बिकॉज तुम तो प्रैक्टिस करने वाले हो नहीं, है ना? नाउ डिस्टेंस एंड टाइम एंड स्पीड एंड टाइम ग्राफ. नाउ this is very simple. It is basically what you have. It is and doubt. Again, algebra. Non-linear simultaneous equation. Division, doubt. Okay. 17. आज कौन सा है? 18, राइट? Yeah. अच्छा, कल अपन ने डाउट ही लिया था ना तुम लोग का? हाँ. कल ग्राफ नहीं किया था. हाँ, तो कल क्या किया था अपन ने? Doubt. खाली डाउट्स. मिक्स, हाँ, पान बाई का मिक्स पान बाई डाउट. ये पूरा एक सेशन ले लिया था है जब भी आएगा. आज भी लेट आई थी. आज क्या था, लेट क्यों आई? मैं भूल गई क्लास का. हाँ, भूल गई थी. वेरी गुड. ओके, नाउ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू, सपोज देयर इज अ ग्राफ हियर. लॉजिकली मेरे को बताओ, कॉमन सेंस, राइट? You know the formula for speed, distance, and time, right? Yeah. Yes. So if I give Yes. you this graph here, and there is another graph. Okay.
Now this is the speed here, right? No, this is the distance and this is the time. This is the time and this is the speed. Okay. Now you know physics. Everybody has a physics. Yeah. थोड़ा सा physics हाँ का दिमाग लगाना पड़ेगा. हाँ. I draw this here line. I draw this graph. You have to tell me what exactly it is happening, right? Yeah. I'll do some similar graph here. Almost identical graph, right? Can you tell me what is happening? Yeah. Okay, one by one. Only yeah one point you can tell. Some other point others have to tell. Okay. Hmm. Now Ayana will tell one point. Then Tanvi or Akshara. And then Akshara or Tanvi. Okay. Then Ayana will again come. Chalo. Tell me. What Uh, is the read from the graph? What exactly the line means? for distance and time, that line is showing speed. Which one? All these lines here in this graph, Mhm. that's showing speed. Okay. Chalo. Who is going to tell me next? Akshara I have or to Tanvi? say for distance time only or speed No, no, time no. also I can. You are going to answer. Akshara? हाँ Okay. Now can you prove what she says? I am a dumb student right now. Okay. I don't know what she's saying. Right? She told me the red line is speed. Right? In the first graph. First graph. Yeah, yeah. First graph. Yes, yes. I'll only stick to first graph. Don't worry, darling. I am dumb, but not that dumb. Okay? I'll focus only on one part. Hmm. Now prove yeah this. She said it's the speed. Now prove. so the line is showing the distance covered like in this much time. Hmm. Okay. So we can say that showing distance covered per unit time. So that is the same as speed since speed equals to distance. चलो एक पॉइंट टेकन वेरी गुड तन्वी तन्वी She left the meet. नो she was there she Oh, joined हाँ, never mind. Yes, sir. Yes. sir. अब ये बोल रहा है कि ये स्पीड है ये जो लाइन है ना जो रेड ये बॉक्स में रेक्टेंगल में ये वाला हाँ ये बोलती है स्पीड है हाँ तो अक्षरा ने एक कुछ एग्जांपल दिया कि उसने बोला डिस्टेंस कवर्ड अपॉन यूनिट टाइम है इसके लिए वो स्पीड है मेरे को स्पीड हाँ डिस्टेंस टाइम नहीं मालूम है तो हाउ विल आई नो मतलब जितना डिस्टेंस इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है ना तो इसलिए जब आप देखोगे तब हाउ विल आई फाइंड द डिस्टेंस चलो आई हैव गिवन सम मार्किंग आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस कैसे मिलेगा यू डिस्टेंस इज गिवन ना तो क्यों ढूंढना है तो क्या आएगा ये डिस्टेंस कितना है यू कैन यूज योर स्केल वट एवर यू वांट राइट डिस्टेंस कितना तू अपना अपना मेजरमेंट ले सकती है ये इधर गया यार हम्म, इधर इधर सो अगेन दिस इज ऑल्सो स्पीड अयाना Yeah, all the red lines are all speed. light are speed very good so I want the speed of this Hmm. can you tell me the speed how will you find Yeah. ना ना you नहीं 1 by
वन बाय पर हाँ, लाइक डिस्टेंस कवर्ड जितना है वो whatever डिस्टेंस कवर कितना है बता, ले कोई भी एक डाल, नंबर डाल। 10। कैसे 10? मेरे को क्या पता, हाउ यू गेट 10? गेस, वाई एक्सिस पे कुछ दिया नहीं है तो गेस कि 10 किलोमीटर, 10 ये 10 किलोमीटर। कैसे लिया? 10 हाउ डू यू गेट 10? हाउ डिड यू गेट आप डिस्टेंस यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम वो पहला वाला पॉइंट मार्क टू करना बेटा, मार्क कर, तेरे पास पेन है? एग्जैक्टली यस। हाँ मार्क हाँ, करना सॉरी फिर। सॉरी, आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, राइट? कैसे करेंगे? स्पीड, हाँ, कैसे निकालो? तो वो डिस्टेंस माइनस ऊपर वाला डिस्टेंस माइनस सेकंड वाला डिस्टेंस। राइट, तो ऊपर वाला डिस्टेंस है, उसका कोई नाम रख। ए सपोज ये बड़ा, क्यों, डिस्टेंस है ना बेटा। तो ये D0, D1, D2। D2, राइट। हाँ, इधर T0, T1। T1, T2, करेक्ट। हम्म, तो क्या आएगा? डिस्टेंस टू माइनस डिस्टेंस 1 अपॉन T2 हम्म अपॉन T2, हाँ, हम्म क्या आएगा? D2 अपॉन D1, D2 माइनस D1 अपॉन T2। करेक्ट, ये y एक्सिस है। कैन आई टेक इट एज, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ D आई टेक y, y2, y1, x1, x2, कैन आई टेक y2 minus y1 is equal to x2 minus x1, करेक्ट। स्लोप, हाँ, ये रिलेटेड, ये देखा देखा लग रहा है किधर? स्लोप का। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होएगा? इज द स्पीड, राइट। हाँ। समझ में आया? हम्म, वेरी गुड। अब आते हैं सेकंड ग्राफ पे, करेक्ट। बाद में मैं समझाता हूं क्या है, अभी आयरा नहीं बताएगी ये। अब अक्षरा बताएगी कि सेकंड ग्राफ में ये जो रेड लाइन है उसका मीनिंग क्या है। Here the red line is showing acceleration. सही जवाब है, तुम्हारा फिजिक्स तो बहुत अच्छा है? Thank you, sir. मैं तो सोचा है ना, कहीं अच्छा होएगा, ये तो तुम भी मास्टर हो। इट इज स्पीड अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। करेक्ट। एक्सेलरेशन हो गया। अब बताओ, स्टार्टिंग लाइन तो समझ में आ गई, राइट। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है, राइट। हम्म, हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या है? पान भाई बताएगी फर्स्ट में, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जरा सोच के बताना बेटा, क्या कर रही है रेड लाइन, स्लैंडिंग लाइन? इंक्रीज हो रहा है हाँ, एक्सेलरेशन, पहले इंक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, फर्स्ट में रेड लाइन का मीनिंग क्या है? सेकंड ग्राफ का फर्स्ट लाइन ना। फर्स्ट ग्राफ का स्लैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, ये वाला, ये लाइन ए, यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर ए में इट इज द डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, ये वाले में। हम्म नहीं सॉरी, ए में टाइम बढ़ रहा है बट नो डिस्टेंस इज कवर्ड, तो क्या कर रहा है? स्टॉप्ड है, लाइक हाँ, आराम कर कुछ रहा नहीं है। हो रहा, क्या कर रहा है? स्टॉप्ड है। आराम कर रहा है, ड्राइवर हाँ खाना खा रहा है, हाँ, करेक्ट। यस। बी में क्या कर रहा है? और बी में उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट अ सर्टेन टाइम। हाँ, तो क्या हो रहा है?
तो इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम्म। अब क्या हो रहा है उसका दोनों केस में ए और बी में स्लोप जीरो है, राइट? क्या है? तो जीरो। स्लोप जीरो है, मतलब पहले वाले में स्लोप क्या था अपना? स्पीड। दैट मीन स्पीड जीरो, मतलब व्हीकल स्टॉप्ड है, राइट? नो ट्रैवलिंग। हाँ हाँ खाना खा के सो रहा है ड्राइवर। और बी में क्या है? स्लोप इज जीरो, मतलब नो एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट स्पीड, करेक्ट? हाँ। समझ में आया? सो yes, कार इज मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड। समझ में आ गया? यस। yes. Yes. अब तो यहाँ पे हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो मेरे को समझ में आ गया, ये तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे है एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन मेरे को चाहिए नहीं, चलो आ गया मेरे को, आई गॉट एक्सेलरेशन। अब मेरे को देखने का इतनी स्पीड से इतना ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट? तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल? अरे दो दो जन का हाथ ऊपर हो गया, किसका हाथ ऊपर नहीं हुआ अभी? ओहो, पान भाई, हाँ। तेरा ही हाथ ऊपर नहीं हुआ है? नहीं मेरे को पता है, हैं? यार है, पता है कैसे करना है, पर बता कैसे करने का, बता। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जितना स्पीड कवर किया उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। तो यहाँ पे कैसे करेगी? यहाँ पे तो टाइम और डिस्टेंस अलग अलग है, हर एक जगह पे अलग टाइम है, हर एक जगह पे अलग स्पीड है। तो क्या कर? एवरेज डिस्टेंस। अच्छा, एवरेज डिस्टेंस कैसे लेगी? एवरेज डिस्टेंस कवर। नहीं एक्चुअली चलो बताओ। अगर मैं स्पीड एंड टाइम का ग्राफ कुछ ऐसे बनाता हूँ, चल तेरे के लिए थोड़ा सा आसान करता हूँ। आई डोंट नो वेदर दे विल आंसर इट करेक्टली और नॉट, बट दे रेज द हैंड, दैट मीन्स आई अज्यूम के दे नो इट। ठीक है ना? मैं करता हूँ, एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, आई ड्रॉ सम डिफरेंट ग्राफ। अब क्या होएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल? ये स्पीड एंड टाइम ग्राफ है, राइट? इधर स्पीड, इधर टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? ये कांस्टेंट स्पीड से एस्केलेट करते जा रहा है, राइट? यहाँ पे वो रुक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होएगा? वो लास्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड, सॉरी, लास्ट स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट टाइम। पक्का आ जाएगा? हाँ। डू यू अग्री अक्षरा? No, sir. क्यों नहीं? उससे बोला स्पीड इनटू टाइम है, बराबर तो बोल रही हो। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, बता बता बोल रही है, हैं? But straight graph, like straight line graph, it will work. But like for the previous one, it won't work. पक्का ये चलेगा यहाँ पे? सपोज आई एम सेइंग दिस इज द स्पीड विल बी से 100 km/h एंड दिस इज टाइम No, इज no, no, 2 no, 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 it won't be. Sorry, व्हाई? because the distance is not the full thing. It's the area under graph. क्या हो रहा है? एरिया So it अंडर will द be ग्राफ। half into 100 करेक्ट, into. हाफ इंटू स्पीड इंटू टाइम, राइट? क्योंकि इतना ही आएगा बेटा, यही एरिया कवर होगा, क्योंकि ये 100 पूरा नहीं है। ये 100 km की स्पीड से कांस्टेंट नहीं जा रहा है, उसका धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ से तेरा जो ये आ रहा है ना, उतना टाइम जा रहा है, यहाँ पे तो इतना ही एंगल आएगा, राइट? समझ में आया? तो ये जब आएगा तो यहाँ पे ये क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया अंडर द कर्व। ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, एक ये और ये, वॉट एवर यू वांट टू डू इट, राइट? और यू कैन टेक इट एज दिस एज अ ट्रेपीजियम और वॉट एवर। नहीं, वो नहीं आएगा, राइट? ट्रेपीजियम नहीं आएगा। तो ये अलग अलग ट्राइंगल बनाओ। इधर एक ट्राइंगल से आएगा 1 2 3 4 5 का, जब एरिया निकालेगी तो तब जाके तेरा डिस्टेंस ट्रैवल आएगा। समझ में आया? हाँ। क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है ना, इट इज नॉट एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड होता तो कर सकती है तू, यार, राइट? समझ में आया? यस। बस हो गया तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व वाला पार्ट खत्म। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे खत्म हो गए। इजी है बहुत, खाली मेरे को तुमको कंसेप्ट समझाना था, राइट?
अंडरस्टूड? Yes. वेरी गुड। चलो अभी हम डेविड रैनर खोलेंगे एंड उसमें से सम देखेंगे, राइट? ग्राफ इज 390। पैरेलल लाइंस ग्राफ 9.3, ये तो सारा हो गया अपना, राइट? 9.7 पे जाना है अपने को। इनइक्वालिटीज भी हो गया अपना। हाँ, ये वाला है ना? ये भी देखिए। नाउ दिस इज समथिंग, दिस इज अ टिपिकल ग्राफ, राइट? इसमें अलग है, दिस इज वैन एंड दिस इज कार, राइट? So this is whether you have to compare, okay, when this will overtake. Okay, can you see this? What will happening is the van started first, right? It is started with the slower speed. I'm just giving you idea how to read this graph. The van is started first at 8 o'clock. It is started at a lower speed. Then he was resting, right? It is like a, oh, कौन सा था? Hare and tortoise, right? Hare and tortoise का story है ना? He started early, then he rest like a tortoise or a hare. Then they started little with a higher speed. This cross overtake this point. Then he rest. Then again hare started. Okay, he crossed this at this point. Then he took a rest. When he took a rest and started again, he still not reached the destination. This reached the destination. Then again he rest. By the time he rest, this person reached at this point. Then he started with a faster speed than this. Still, the hare reached earlier. Correct? But he started at the 1 hour later, but he finished in 12 hours 15 minutes. So who is the faster? The tortoise is faster than. Correct. The dotted line is faster, right? Because it has covered almost the same distance. We can't say because it is distance upon time graph. So he covered almost both cover the same distance, right? But they started differently. Correct. So both cover 200 kilometers, right? Yes. Both cover 200 or 100 kilometers? 100 kilometers. अच्छा, ऊपर 100 किलोमीटर, वापस भी तो नीचे आया 100 किलोमीटर। Oh, हाँ, okay. 200 kilometers. 200 का Total फिर भी, 200. right? It both travel 200 kilometer, but dark line traveled in 4 hours. So it And travel at the average speed of 50 kilometer per hour, and this person travel in 3.5 kilometers. like from 50 minutes, 30 minutes. 8:45 to 12:15. So it is 3 hours and 45, 30 minutes, right? 3.5 hours. Yeah. Correct? Hmm. So dotted line is faster, right? Hmm. How long was the van stationary during the journey, right? So this you have to take half an hour and Half an 45 hour. minutes. This is half an hour and 45 minutes. Both took the 45-minute nap, right? What time the car first overtake the van, right? So you have to take this time, 9:50. Line of intersection. right? तो वो तो सिंपल है, इसमें बहुत सिंपल है, राइट? सो ये जरा चेक कर Yeah. लेना कहाँ पर है, ठीक है? These are very easy ones. ठीक है, this is the graph they have given in inter. Actually, this is how exactly it happens, right? On the road के कैसे जाता है? This goes the constant speed, okay, time and a distance. This is going to the constant speed. This is now what happens? This started with a higher speed and then its speed reduces. And this started with a lower speed and then increases the speed, right? It is increasing acceleration and decreasing acceleration. करेक्ट, सही जवाब। अब फिजिक्स में तुम अच्छे है, इसके लिए मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है।
Speed and time graph, we have done. Yeah. Distance and time graph. So distance, area under the curve. This is what I explain you why it is area under the curve. We Acceleration, can, the acceleration. for that we can use trapeziums also, na? Yes, you can use whatever way. Whatever you like it. Whether you make triangle, you make a trapezium, you want to put a rectangle and triangle, it is your choice. Okay. Objective is you should get the correct answer. That's it. Right? ठीक है ये सारी एक्सरसाइजेज है यू कैन गो थ्रू दिस वन बाय वन विल टेक इट बिकॉज मैं इसमें कराऊंगा नाउ ग्राफिकल सॉल्यूशन दिस इज व्हाट यू डन नॉन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन राइट Yeah. ओके दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन दिस राइट अब अभी हमने किया था इसी का मोटा वाई था राइट वी हैव सॉल्व दिस व्हाट यू आस्क्ड मी राइट Yeah. Yeah. but this was a negative slope is okay but then this is a graph was negative graph right so this is same thing what you have right clear now sometimes you can solve the equation accurately by plotting the left hand side and the right hand side on the two different graphs and seeing which in which they intersect right now Huh. graphical solution of this so he has plotted this is what exactly I told you right y is equal to x minus 3 the whole square y is equal to 5 minus x right clear Yeah. so same way यहाँ Yes. पे अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करो तुम्हारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है this will be more useful okay now see solve this following equation by plotting the appropriate graph and finding their points of intersection now this is when they ask you usually they ask you the parabola or quadratic cubic equation and the straight line and this is very 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 important right now this we can do it in a graph but they ask you multiple things and this question whenever it comes it is minimum of 10 marks maximum of 13-14 marks right it depends and whenever it comes it is a it can be any type of graph it can be reciprocal graph it can be quadratic it can be cubic most probably it is quadratic जो मैं 10 मार्क का 15 मार्क का 12 मार्क का बोल रहा हूँ this will be usually quadratic or cubic at the most probably it is quadratic most probably I'm not saying always but I've seen one of the query with the exponential graph also and cubic graph also correct and they have multiple lines and they have to form the equation draw a line which is intersecting that is the main critical part you need to understand how the graph has to be drawn और मैं आज नहीं सिखाऊंगा let we write the paper that time I'll tell you ठीक है Okay. now the last part of it it is the same thing right they ask you to plot the graph which is the same thing right can you see this? Yes or no Yes. and nine-dimensional cybernetic equation also I told you that algebra is very important and that is why I ask you to learn the Zaira Polado. If you learn this, it becomes very easy for you to understand. See, can you see this? Concept is the same. Only thing is it is graphical representation and there we do it as algebraically. This is the last topic of graph. After that, we'll again take a break. Okay? Maybe I'll just brief you about, for this, you need to understand the completing square method. You know what is completing square method? It's where you divide the coefficient by 2, na? Not necessarily. And then Which coefficient? of the highest power. No. Of the second highest power. अभी हम क्यूबिक के क्वाड्रिक है Like 4x. This square है ना completing square is means what? It is a quadratic equation, right? Yeah. So It cannot be cubic. square one.
So there are only three parts. No, we'll What is x divide square? one coefficient. Hmm? We'll divide the coefficient and then add it to the no. Don't rectify. This is what you are doing, rectify, right? Hmm. Okay, chalo. I'll give you one equation. Can you complete the square? Chalo. I'll give you some equation. Let's see. How this you rectify, how it will trouble you. Hmm. 2x square minus 8x plus 5. What is the completing square method means what? Divide the It has to be in the form of x plus p plus q format or any plus or minus whichever. Correct? Yeah. Yeah. It has to be in this format. क्या आएगा? Oh, so 8 upon 2. First you divide the whole thing with 2, right? The Sorry? coefficient of x square. You'll divide the entire equation with 2. Why? I think that is the first step, but I don't really remember. Huh? Divide by 8x divided by 2. Yeah. No, 8x divided by 2 or she's telling whole equation divided by 2. Whole expression divided by 2. No, It's only 8x divided by 2. yeah. I think 8 divided by 2 Okay. plus Chalo, something. let's have a debate. Akshara, you put your point. You justify why it is so. And Ayana will put her point. मेरे पास 10 मिनट है 10 मिनट डिबेट कर सकते हो Now I'll tell you the base concept. Who is going to justify? Who is going to take the dais? कौन बताएगा सबसे पहले कि क्या होएगा? We'll no, never mind. No. हाँ बोलो बोलो बेटा. No, I have to think. हाँ पान भाई मेरे टैलेंट. को सिर्फ पता है कि 8x डिवाइड बाय 2 होता है, क्यों होता है वो पता नहीं है। ये इसके लिए बोला था रट्टेबाजी. अक्षरा So I'm not sure of the तेरे तेरे method, so I तेरे don't दोनों know. कुश्तीबाज तो बहुत वीक निकले हैं. You have clear ground to win now. But I'm not sure about my method. क्यों? चलो आई विल हेल्प यू विद दिस. ए यहाँ पे डाल देता हूँ अभी. Yeah. Mm, If you want to complete the square, what is mandatory thing? We'll divide. No. x square needs to have 1 as a The coefficient. first term, the highest power of x, should be a perfect square. Oh, so it will That is not the first be. requirement. Correct? So what will Yeah. happen? This is not a perfect square. So it will No. divide by This is 1. not irrelevant. This is irrelevant, right? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. For me, this is a mathematics. How much you score in mathematics is important for me. How much you score in English, science, history, geography is irrelevant for me. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, right? They'll automatically fall in place, right? Yes or no? Yeah. So now, if you have 2x square minus 8x plus 5, if you want to make this perfect square, how will you do it? So we'll divide 2 by 2 because we need it to be a perfect square. You cannot divide, na? Or you multiply everything with 2. You cannot Then it multiply. will become You 4. cannot change the value. First requirement, you cannot change the value of the expression. If you multiply or divide, it will Oh, change the equation, right? If You you split multiply or divide, minus 8. huh?
No, I thought you'd split minus 8x, but that does not help. No, that is not possible. If it is complete square, I could have done it already, right? If it is factorizable, I could have done it, but it is Can not a we factorizable. add 4x, sorry, 2x square? Then you have to subtract also 2x square, right? So how will we do? I don't know. That is not asking. That is why Ratta won't work. Understood? You have to principally understand. First term has to be perfect square, right? I cannot multiply because if I multiply, I have to divide also, right? To make this equation equal, if I multiply here, I have to divide also, right? Yes or no? Oh, so you, Yeah. okay. Huh. Correct. Then only it will require revert the same. Then it will become okay, 4x square minus 16x plus 10. The whole divided by 2 will be there, right? Yeah. But it is always better to, instead of dividing, keep this as a x square. Whatever is there, take 2 common. X square minus 4x plus 5 upon 2. Possible? Why are we dividing by 2? Because I'm taking Oh, 2 you took common. 2 out. Okay. I'm taking 2 common out. And that is why I gave you, Oh, huh. So if you that is why I gave multiply you by, 5 here. okay. Correct? Now Yeah. what is important is, now because this person was alone earlier, now it is got married. तो अभी इसका वाइफ भी आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? So then you can do a plus b and a minus b again. हाय कैसे डार्लिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ी है. Oh, yeah. So now what do you do? 2, what do you do? X square minus 4x. Now we want to have children. तो इसको घर वाले को सबको बाहर करो. And then you want to have children. Children will be what? It is a square minus 2ab plus 4 minus 4, right? So this become a perfect square. It has become 2x minus 2 the whole square. This is minus 5 upon 2. It will become minus 3 upon 2. Correct? How do you take 4? Like, how do you know you have to take plus This 4 is where minus? what Ayana was saying. Divide this middle term by 2 because this is what? 2ab equal to minus 4x or 4x, right? Huh. But a is equal Yeah. to x. What is this will be? Yeah. What this will be? It will be a square minus 2ab. Now you need to plus b square minus b square plus 5 upon 2, right? That is what you need to do, right? Why are we subtracting by 4 here? I mean, adding by 4. That's what I didn't I understand. mean, like, this 4, why are we again Correct, subtracting? correct. बताता हूँ. इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लूं इधर, ठीक है. Now this is equal to a square minus 2ab, correct? And this, instead of this, I want a b square here, correct? 2b, how is it 2ab? Because it is a minus b, the whole square will be equal to a square minus 2ab plus b square, right? Huh. So I got a first term here as x square. I got a second term also is this. Oh, And I want this b square. b square is 5 upon 2. Okay. I don't know. This is not a b square. Oh, I have to make this b square, oh. right? So suppose you come to my home, right? You took a rickshaw from Kandivali East, but you got only 50 rupees. And you came to Borivali East West Bridge. You came to know, अच्छा यार मीटर तो already 60 rupees हो गया है. So what you'll do? What you'll do, Anna? If I go home and I have, Good. The worst solution you are thinking of.
go home again, so double fare, हाँ है ना, time waste. This is a worst solution. okay Then what you do? You reach halfway. This is Hiren Desai house. This is your house. You already left halfway. Okay, the meter you have 50 rupees. This is already here 60 rupees. What you'll do? the meter is saying The meter is proper. सब कुछ proper है. oh हाँ so You have to give the money to the rickshaw wala, right? They will not. Suppose by the time you come here, it will be 120 rupees. You have only 50 rupees. What will do? किधर से आवाज आ रहा है? तन्वी, हाँ सर किधर से आवाज आ रहा है? सर हाँ, कब से मर 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 आवाज आ रहा है? मैं बोल ले रहा हूँ. But you can understand ना, there is a discussion going on, right? हाँ You can tell them ना कि my class is going on. हाँ. हम्म. I can pay later रिक्शा वाला देगा तेरे को पे लेटर करने के लिए. नहीं फिर I can GPay नहीं, कोई ऑप्शन नहीं तेरे पास. जीपे पे फोन ही नहीं है. मतलब फोन है बट जीपे नहीं है. डब्बा वाला फोन है. there is no option देयर इज ऑप्शन. I can borrow There is one सही option, जवाब. so can बोरो किसके पास pay. करेगा? रिक्शा वाला देगा तेरे को? नहीं तो कौन देगा? I can borrow from दुकान वाला. I can borrow from you and give it back later हाँ, करेक्ट. तू नून पर्सन तेरा मैं ही हूं ना इधर, राइट? हाँ सो यू कैन बोरो एंड Yeah. गिव इट टू मी नेक्स्ट टाइम. Yeah. ठीक है ना? सो 70 रुपीज मेरे से बोरो कर तेरे को, बिकॉज यू नीड 70 रुपीज, एंड गिव इट टू बैक नेक्स्ट डे. करेक्ट? हिसाब बराबर oh है ना? अब तेरा क्या है, यहाँ पे तेरे को 20 स्क्वायर चाहिए. एक टेम्पररी बोरो करो, फिर टेम्पररी माइनस कर दो, और यहाँ पे 5/2 लिख दो. खत्म किस्सा. so we will do plus 8 divided by 2 which is 4 ना ना, 8/2 तो ऑलरेडी हो चुका डे 2 बाहर आने के बाद, राइट? so we'll just add whatever that coefficient is we'll add it and subtract again करेक्ट. ठीक है. अब तुमको यहाँ पे I'll show you. The equation is 2x² minus 8x plus 5, right? So first of all, what I do, I take 2 common. so X 2 square minus and 4x plus हाँ, 5/2, correct? yeah So this is become a format of 8 x square minus minus 8 2ab 2 plus a 5/2, right? So हाँ we don't know what is b, right? So we need to find b. Here I get x is equal to a, which is correct. And this one is Yeah. equal to 2ab, yeah correct? X and this has gone because x equal to a. This is cut. B is equal to what? 4/2. have it So two. So then why did you do +4 -4 and not 2? अरे रुक जा मेरी जान, अभी मैं गया नहीं. ये समझ में आया स्टेप? wait 2 x is equal to a and 2ab is equal to 4x करेक्ट. आई कैन कंपेयर दिस ना. हाँ and then you make x the नहीं, एक्स एक्स से एक्स तो कट हो गया ना सीधा. x एक्स एक एट कट, राइट? but that is 2ab why are you cutting x तो 2 into 8. अच्छा, ओके. लेट्स मेक द b एज अ सब्जेक्ट. चलो, so b is लेट्स मेक, equal बिकॉज यू वांट टू फाइंड b, राइट? हाँ So b is equal to 4x/2a, right? so 4 and 2 cut ये कट होगा ना पहले x और a. why अरे बिकॉज बोथ आर इक्वल ना. x and a oh करेक्ट. okay हाँ So what will it be? B will be 2, right? And what is b square will be? 4 So you require to complete this as a complete family, you require one child also, right?
है ना, टू मेक द फैमिली फोटोग्राफ यू वांट वन चाइल्ड ऑल्सो, राइट? हाँ तो क्या होगा, अपना चाइल्ड है नहीं, बाजू में से बोरो करो और बाद में फोटो गिरा के बाद में वापस दे दो उसको, बराबर है? प्लस, हाँ तो +4 टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x. I want child according to the mother and father age, right? okay. So we'll do this in every Husband wife है 25 years and 29 years and you borrow a child like me which is 53 years old, चलेगा क्या? नहीं You have to borrow the child according to your age, right? ठीक है, सो यू बोरो. अच्छा, तेरे को रिक्शा को आना है, तेरे को यू वांट 100 रुपीज और 70 रुपीज. यू से सर मेरे को 5 लाख रुपया दो ना, मेरे को रिक्शा का भाड़ा देने का, मैं दूंगा क्या 5 लाख? नहीं सो यू शुड बोरो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज योर नीड, राइट? सो आई Hmm. वांट हियर +4 and this is -4. Correct? Understood? This, like you said, x is equal to a and all that will be the same for all. Correct. That is why I'm doing this thing, right? Oh, so we can, okay, समझ में आया? Clear? Understood? yeah. And this is the 5/2 remain as it is. So I'm not changing anything, right? I'm adding and I'm subtracting the same one, right? Because I want to make this as a complete family Oh, in this, right? so we are adding and subtracting, Because to nullify the effect and without we're changing the effect, dividing. right? Okay. So 2 into bracket x minus 2 the whole square minus 3/2, right? So first, 2x minus 2 the whole square minus 3, that is your answer. so we're dividing this, and then after dividing that, we're squaring it and then adding and subtracting. ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आज तो मैं खाली एक सैंपल लिया तुमको, राइट? आई Okay. हैव टेकन सम सैंपल टुडे, ठीक है ना? अब तो Yeah. कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत करेंगे क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें Oh. बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज Hmm. तो मैंने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है तुम्हारा, राइट? Hmm. बिकॉज पहले तो अभी डिफरेंशियल सीखना है, ठीक है? मैंने तभी तो बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. So we'll take easily. If you want to take 3 sessions, 5 sessions, 3 weeks also, I don't care, right? But बचा Ayana and Tanvi. I am taking endlessly. If you want to buck up with me, I am giving you March end. ठीक है ना? अभी Ayana का एग्जाम है, ठीक है? तो I am giving you till April 15. तेरा एग्जाम कब खत्म हो रहा है ना? April 12th. April 12, ठीक है? तू मेरे को अपना शेड्यूल बना के दे. You know how many assignments are pending for you? ठीक है Yeah. तन्वी, तेरा एग्जाम खत्म हो गया ना? नहीं सर, चल रहा है. कभी खत्म होएगा? 25th March. ठीक है, तू अपना टाइम टेबल बना एंड आई वांट यू टू पुट इट ऑन द ग्रुप, ठीक है? आफ्टर एग्जाम ओवर आई विल गिव यू 15 days मैक्सिमम. नाउ डोंट बी इन रिलैक्स मूड एंड तन्वी यू डोंट बी इन कॉम्प्लेजेंट मूड. आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी सिंपल वे, आई विल स्टॉप योर क्लास. आई डोंट केयर इफ यू आर कमिंग और यू आर नॉट कमिंग, ठीक है? यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अप टू द मार्क व्हाट आई वांट, राइट? एंड वो प्रैक्टिस से आएगा. एंड आई एट एनी पॉइंट इन टाइम आई डोंट वांट which I told you earlier because it is recorded and I will tell you right now. ठीक है, समझ में आया? ओके. ओके, सो ये प्रैक्टिस करो, आगे जाके मेरे को बताओ क्या है. आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग राइट नाउ.